Assalamualaikum grade 10. How are you? Faiza Nadeem here with your English lesson. And as usual, as always, Faiza Nadeem is concerned and is optimistic that all of you are doing well at your home and are revising your academics. Academics is an essential element of everyone else's life, right? तो एकेडमिक्स को ओवरलुक नहीं करना, एकेडमिक्स पे कंप्लीट फोकस रखना है हमने. क्या करें हम आज? आई एम गोइंग टू टेल यू विद इन अ सेकेंड. लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन. Yes, my dearest children, what is the board telling you? The board is telling you that we are going to do the objectives of the poem Peace, which is unit 8 of your textbook and is comprising of pages 91 to 100, right? This poem, Peace, is written by Dr. Hartman and it speaks about the core nature of the wind, that it rages and it demolishes when it is angry. But it's not its core nature. Its core nature is serene and swift. The wind is not intending to harm anybody during the everyday life, but sometimes there are things that ignites the wind to its utmost aggression, and then and there the wind is then compelled to break everything that is human made. Alright, so we are going to do the objectives. Objective क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव पेपर आपके इंग्लिश पेपर का पार्ट ए होता है, ठीक है. उसमें आपको एक बबल शीट दी जाती है और उस बबल शीट को आपने फिल करना होता है अकॉर्डिंग टू द आंसर्स दैट आर द करेक्ट वंस रिगार्डिंग द क्वेश्चन पेपर दैट हैज बीन गिवन टू यू. बबल शीट आपकी कुछ इस तरह से होती है बेटा. उसमें कॉलम्स होते हैं और रोज होते हैं. ए बी सी डी, ठीक है. ऐसे आपके कॉलम्स हैं और ऐसे आपकी रोज है और हर कॉलम में आपके पास सर्कल्स बने होते हैं और आपने उस करेक्ट क्वेश्चन की करेक्ट आंसर से जो सर्कल मैच करता है उसको कलर करना होता है. लेकिन बेटा और बिटिया ये याद रखो कि इफ यू आर गोइंग टू कलर 2 सर्कल्स ऑफ वन स्पेसिफिक question, one specific statement, and you are going to erase blanco white fluid or cross that wrong one out, the computer who's going to scan your bubble sheet is going to disqualify the question. So the suggestion over here is that attempt your question paper first and then tally the answers and color the bubble sheet. Yes, you will have ample time, don't worry. If you will practice accordingly, this is going to be a piece of cake for you, right? So let's move on to the first set of questions that are present on the board. और वो क्या है? वो आपकी poem में से difficult words हैं और आपका ये objective paper का 1, 2, 3 या कोई भी सवाल नहीं भी हो सकता, ठीक है. इसको आपने अपनी स्पेल चेक डिक्शनरी लिस्ट में लिख लेना है और इसका आपने डिक्टेशन दे देना है, स्पेल चेक दे देना है ताकि आप करेक्ट आंसर लिख सकते हो और अपने आप को मार्क्स लूज करने से बचा सकते हो, ठीक है. तो पहला ऑप्शन है रोरिंग और रोरिंग की करेक्ट स्पेलिंग है ROARING. दैट इज योर ऑप्शन सी, ठीक है. ये देखा हमने अच्छी तरह से देख के सी कलर कर दिया. नेक्स्ट इज स्पिनिंग और स्पिनिंग की करेक्ट स्पेलिंग है SPINNING. दिस इज द करेक्ट स्पिनिंग, ऑप्शन ए, ठीक है. इस तरह से साथ साथ सोच समझ के सॉल्व करना. जिस पे कंफ्यूज हो उसको रुक जाना और आखिरी में एक दफा फिर उसे सॉल्व कर लेना. लास्ट इज, चलो पढ़ के देखते हैं क्या है. वेपर, whisper, whisper, whisper and whisper. क्या है whisper? बताएं. This is whisper and the correct spelling is
WHISPER. How many of you whisper in the classroom and you think that the teacher does not know what you are doing? The teacher can hear you and she can tell what you are saying, right? Next, we move on to MCQs. MCQs are multiple choice questions in which you are given more than one choice for one answer and you have to circle the correct answer that is present among one of the four options that is present on your question paper. और उसी करेक्ट आंसर के रिलेटिंग आपने बबल शीट के बबल को कलर करना है, राइट? बट ऑल ऑफ दैट इज नॉट इट्स कोर. यहाँ पे कोर का मतलब क्या है? सेंटर, स्ट्रॉन्ग, हाई या टेम्पररी. सेंटर, उसका वो कोर नहीं है, उसका वो सेंटर नहीं है. जो रेज है आपकी विंड का, वो उसका सेंटर नहीं है, वो उसकी नेचर नहीं है. नेक्स्ट इज स्मैशिंग मीन्स. स्मैशिंग का क्या मतलब है? स्मैशिंग का मतलब फ्लाइंग, मेकिंग, मूविंग या हिटिंग एंड ब्रेकिंग. अच्छी तरह पता है, जब कोई बहुत ही नॉटी कजन आपका आ जाता है एंड ही कीप्स ऑन स्मैशिंग योर थिंग्स, तो व्हाट ही इज एक्चुअली डूइंग, ही इज एक्चुअली हिटिंग एंड ब्रेकिंग योर थिंग्स अप, है ना? नेक्स्ट इज दिस योर बुक. अब ये आपके दो क्वेश्चन थे कॉम्प्रीहेंशन मीनिंग बेस्ड. यहाँ पर आपके आ जाते हैं ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है? इज दिस योर बुक, आपने फाइंड आउट करना है कौन सा प्रोनाउन है आपका. आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, पजेसिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है या पर्सनल है. रिफ्लेक्सिव होता है तो सेल्फ लगा हुआ होता है. पर्सनल ही, मी, इट, हिज, राइट. उसके बाद पजेसिव माय, माइन, योर, योर्स, ठीक है? तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है, ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, पूछ रहा है आपसे कि ये किसकी किताब है. दिस, इट इज एक्चुअली डिमॉन्स्ट्रेटिंग द ऑब्जेक्ट फॉर whom we are asking the question. Next is the roaring wind is an example of. roaring, चीखती, चिंघाड़ती. तो ये जो वर्ड है roaring wind, वो किस चीज की एग्जाम्पल है? वो विजुअल इमेजरी है, ऑडिटरी इमेजरी है, सिमील है या एलिटरेशन है. एलिटरेशन होती है रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड. रोरिंग विंड, आर इन डब्ल्यू, सो एलिटरेशन इज क्रॉस्ड आउट. सिमील होती है कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स विद एज एंड लाइक. सिमील नहीं है, दिस इज क्रॉस्ड डाउन. ऑडिटरी इमेजरी क्या होती है? यानी कि आपको इस तरह की पिक्चर फॉर्म की जाए जो आपकी ऑडिटरी सेंसेस, सुनने को मुतासिर करे. और विजुअल इमेजरी जो आपकी देखने की सेंसेस स्ट्राइक करे, सेंस ऑफ साइट को रिएक्ट करे. तो ये ऑडिटरी इमेजरी है. रोर आप सुनते हो, ठीक है? रोरिंग विंड जो है वो इमेजरी क्रिएट कर रही है कि आप क्या चीज सुन सकते हो. तो ये आपकी ऑडिटरी इमेजरी है, राइट? So let's move on to the next set of MCQs. Give me that book. कौन सी book? That one. तो ये क्या हो गया? ये demonstrate हो गया. हमें पहले ही पता है कि ना ये nominative है, ना ये reflexive है और ना ये relative है. ये demonstrative है. Demonstrate हो रहा है कि कौन सी book चाहिए हमको. Who is standing behind the door? अब ये क्वेश्चन है, ठीक है? इंटेरोगेटिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेटिव है. क्वेश्चन है. डब्ल्यू वर्ड जब मौजूद होगा वो इंटेरोगेट से रेसिप्रोकेट करेगा, इंटेरोगेट को रिलेट करेगा, वो कुछ और नहीं होगा. ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. डू नॉट ब्लेम योरसेल्फ फॉर हिज मिसकॉन्डक्ट. कितनी दफा मिस फाइजा ने कहा है कि अगर सेल्फ मौजूद होगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा. एक लेमैन की डेफिनेशन है, ठीक है? तो नाइदर दिस इज इंडेफिनिट, नॉर दिस इज डिमॉन्स्ट्रेटिव, नॉर दिस इज रिलेटिव. इट्स योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. वी वॉच्ड एन डैश फिल्म. अम्यूजर कोई वर्ड नहीं होता. वॉच्ड पास्ट टेंस है, अम्यूज नहीं हो सकता, ठीक है? उसके बाद अम्यूज्ड, एक ही सेंटेंस में दो पास्ट टेंस सेल्डम यूज होते हैं, तो ये है अम्यूजिंग. वी वॉच्ड एन अम्यूजिंग फिल्म.
her laughter is annoying. Annoying क्या है? Annoying यहाँ पे auxiliary है, past participle है, present participle है या gerund है? Gerund होता है वो verb जो noun की तरह काम करे, ठीक है? Auxiliary is am are helping verbs होते हैं. ये है annoying. Annoying में participle है क्योंकि ये इस को एज एन एडजेक्टिव डिफाइन कर रहा है कि कैसा है उसका लाफ्टर. लाफ्टर इज बेसिकली द जेरेंड ओवर हियर, ठीक है, और इट्स यूज्ड एज अ नाउन. और ये अनोइंग बता रहा है कि कैसा लाफ्टर है, यानी कि ये अनोइंग पार्टिसिपल है. अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो ing, और अगर पास्ट पार्टिसिपल है तो ed. क्या प्रेजेंट है? ing. सो दिस इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल. पार्टिसिपल वो वर्ब्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव या एज एन एडवर्ब काम करते हैं, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई रिक्वेस्टेड हिम टू ओपन द डोर. ठीक है, अब टू ओपन द डोर क्या है आपका? प्रपोजिशनल फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, इन्फिनेटिव फ्रेज है, ये जेरेंड फ्रेज है? ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है. क्यों? क्योंकि वर्ब के साथ टू लगा हुआ है. एक लेमैन की मैंने आपको टिप दी हुई है. याद रखो, जब भी वर्ब के साथ टू लगेगा वो इन्फिनेटिव होगा. तो ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है. बाकी जो फ्रेजेस होते हैं या इन्फिनेटिव्स होते हैं वो मेरे स्पेसिफिक लेक्चर में जाके चेक करो, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द राइटिंग स्किल्स ऑफ दिस यूनिट 8 पीस. Alright, the first question of your writing skill is asking you to write two applications. One application is to the principal to remit the fine and the second application is to arrange a field trip. ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन आप कैसे लिखेंगे? Examination hall, comma, city A, B, C and the date. Date is going to be a hypothetical one. ठीक है, कोई इमेजिनरी डेट पे बिल्कुल एक क्राइटेरिया और एक बाउंड्री होती है, उससे बाहर ना निकल जाना. ठीक है, इतनी ना इमेजिनेशन कर लेना कि 12वें से 24वां महीना हो जाए या आपके 31 डेज से कोई 64th डे हो जाए. सो बी हाइपोथेटिकल, रियलिस्टिक डेट. ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आता है आपका सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो होगा वो दोनों एप्लीकेशंस का डिफरेंट होगा. पहली वाली एप्लीकेशन का सब्जेक्ट होगा आपका रिक्वेस्ट टू रिमिट द फाइन. और दूसरी वाली एप्लीकेशन का क्या सब्जेक्ट होगा? वो होगा रिक्वेस्ट टू अरेंज अ स्टडी टूर. ठीक है, ये आपके दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो गए, लेकिन आपने लाइन छोड़नी है. ये मैंने सिर्फ आपको गाइडलाइन देने के लिए ऐसे किया है. इसके बाद आप एक लाइन छोड़ के लिखेंगे सर या मैडम, whoever is the respective principal of your school. ठीक है, और यहां से आप लिखना शुरू करेंगे it is stated that. उसके बाद पहली एप्लीकेशन में आप लिखेंगे my grandfather was seriously ill and so we had to go to our village on emergency basis. For this reason, I could not write an application to you timely and I am fined for rupees 500. We are from a very mediocre family and
due to the excessive expenditure on my grandfather's health. I cannot pay the fine. Kindly remit the fine, keeping my income or keeping my status in mind. ठीक है, ये तो हो गई आपकी रिमिट द फाइन की. अब आपने लिखना है रिक्वेस्ट फॉर अ स्टडी टूर. आपने ये लिखना है कि इट इज स्टेटेड दैट वी द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 request you to arrange a study tour for us. Since it's going to be our last year in school, we want to gather memories. Along with that, we will be able to learn a lot about our history, which is a part of our curriculum. So, we request you to arrange a study tour to Mohenjo-daro, Harappa, Kyoto mines. That is not going to be a recreational, but a way for us to learn. Right? ये आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी अरेंज अ ट्रिप और स्टडी टूर. ठीक है, दोनों एप्लीकेशंस हेल्पिंग वर्ड्स के साथ मैंने आपको फ्रेज आउट भी कर दी, वर्बली सुना भी दी. आपकी दोनों एप्लीकेशंस एंड होंगे योर्स ओबीडिएंटली से. आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ और नहीं लिखेंगे, योर्स ट्रूली नहीं लिखेंगे, आप उसके अंदर योर्स लविंगली नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे योर्स ओबीडिएंटली XYZ. राइट, ये आपकी दोनों एप्लीकेशंस हो गई. नेवर शो योर आइडेंटिटी व्हेन यू आर डूइंग लेटर एप्लीकेशन राइटिंग इन योर पेपर. ठीक है, इसके साथ ये आपकी फॉर्मल टाइप ऑफ राइटिंग है. जब फॉर्मल टाइप ऑफ राइटिंग होती है तो आपने हरगिज़ ये नहीं पूछना कि हेलो प्रिंसिपल, हाउ आर यू, हाउ इज योर वाइफ, हाउ इज योर फैमिली. नेवर. Directly come down to the question that has been asked. Short, span, to the point, creative writing करनी है आपने. दोनों की beginning ऐसी होगी, दोनों की ending ऐसी होगी. Subject इस तरह से लिखा जाएगा, lines यूं लीव की जाएंगी, इसमें भी लाइन यूं लीव की जाएगी. वो चूंकि थोड़ा सा मैटर ज़्यादा था इसलिए नीचे आ गया. दोनों के मैटर्स की हेल्पिंग वर्ड आपके पास है और दोनों के मैटर्स की डिस्कशन मैंने कर ली है. ठीक है, let's move on to the question number C of the writing skills. Question number C आपको ये कह रहा है कि आप एक comparative essay लिखें, outdoor activities versus video games और text message versus personal conversation. सबसे पहले मैं आउटडोर एक्टिविटीज़ को देखूंगी. आउटडोर एक्टिविटीज़ और वीडियो गेम्स के लिए बच्चे मैंने आपको पॉइंट प्लान दिया है और उसके साथ मैंने पैराग्राफिंग के नंबर्स दिए हुए हैं कि पैराग्राफ 1 में, 2 में और 3 में आप क्या लिख सकते हैं. आपका पैराग्राफ 1 होगा लुकिंग बैक और थ्रो बैक टू योर चाइल्डहुड. इफ यू विल लुक बैक एट योर चाइल्डहुड मेमोरीज, यू विल रिमेंबर यू प्लेइंग आउट in the field through and through. You did not want to come back to home. You wanted to play. You wanted to sweat. And all those activities and all those games, they were not only fun, but they were supposed to be the biggest ambition of your life. You keep on planning the next day's matches, the next day's game every night. So they were not only a source of physical activity, they were a source of mental appreciation, of mental hard work as well. Then you will write about the advantages of outdoor activities. That outdoor activities not only build the stamina and the physical health, but they teach a child to adopt the leadership qualities. They teach a child to participate in such a manner that he learns how he can be a proper, a beneficial team participant, how he can help his team win by doing certain activities that are going to assist the team
in winning their target. So they learn how to mix up, they learn how to mingle, they learn how to be an active or avid participant. And then you will write about the conditions of today, that today technology has changed the outlook of a child. The children have become more gadget oriented, they have become technology oriented. This has not only increased their IQ but has turned them into introverts. They have no idea of how to be a team participant because they depend on their individual hard work. They depend upon their individual input, and thus the spirit of team participation, the spirit of team victory has completely evaporated or has completely left their mind. Their mental health is no doubt growing up. They are becoming wiser as compared to the children of the previous ages. But this has definitely hurdled or snubbed their physical growth. So this is how you're going to write about outdoor activities and video games. And the last topic is writing a comparative essay on text messages and personal conversations. You will definitely speak about the benefits of text messages in one paragraph. Okay? Like text messages has brought us closer to a certain level. Like if you're in a meeting and somebody is calling you up, rather than that somebody getting upset or getting scared why you're not attending a call, you can just send a text message comprising of 3 seconds that in a meeting and will call you later. Likewise, wherever you are, however you are doing, you can inform your family regarding your whereabouts and your activities. But this definitely has lost the art of conversation. Okay? Inconvenience and hassle. The art of conversation. Children nowadays have their heads down. They are constantly using up their mobiles and they are involved so much so in their virtual world and virtual friends that they have forgotten who is nearby. They are more into conversation on WhatsApp or in any other text group rather than the person who is sitting next to them. So verbal conversation has become completely femtished, has become completely obsolete nowadays. And then you can write a furthermore advantages of text messages, like text messages has basically eased a person's life. No doubt text messages are very important, very essential, but then you must learn to keep a balance between the text messaging and the personal conversation. This is how you're going to conclude it, that it is by the end of the day depending upon the thought of a person, it is by the end of the day depending upon the way or outlook of a specific person on how to use the technology sensibly and how to keep a balance between the virtual and the real world. Alright, let's quickly recapitulate today's lesson. What did we do? We did the objectives of the poem piece, and then we did the writing skills, wrote 2 applications and 2 creative writing essays. Did not write, but I had guided you up and I had given you the point plan. हंसते रहो, खेलते रहो, फायजा नदीम को दुआ में याद रखो. ठीक है, जो कुछ कहा है वो सारा अटेम्प्ट कर लो. ऑब्जेक्टिव्स को अपनी ऑब्जेक्टिव बैंक में ऐड अप कर लो. एप्लीकेशंस, क्रिएटिव राइटिंग ज़रूर लिखो. और जब तक मैं दोबारा आपसे मिलूं तब तक ये सारा काम आपने किया हुआ हो. ठीक है, फायजा नदीम को इजाज़त दो. इंशाल्लाह we'll see each other again in the next lecture. By the time, Allah Hafiz.